Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to my channel, Science of Life, with Dr. Mohammed Yousaf. We were discussing the cardiac axis and we had started the abnormalities of cardiac axis. We are going to see discuss some more cardiac axis abnormalities. But before that, one hadith as my routine. عن جابر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله. हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत मुस्लिम शरीफ की रवायत है. हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये फरमाते सुना और साथ उन्होंने ये भी बताया कि उनकी वफात से 3 दिन पहले हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाते उनको ये गए होंगे ताज़ियत के उसके लिए बीमार पुरसी के लिए गए होंगे तो उस वक्त बातें कर रहे थे. उस वक्त उन्होंने सुना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम में से हर एक को चाहिए कि उसको ऐसी हालत में मौत आए कि उसको अल्लाह के साथ अच्छा गुमान हो, यानी जिंदगी ऐसी गुजारी. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान का मकसद ये है कि उनकी जिंदगी ऐसी गुजरे कि मौत के करीब वो खुश हो कि मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ, उसको गुमान हो कि अल्लाह मेरे गुनाह माफ करेगा, अल्लाह मुझे अच्छी जगह देगा, अल्लाह मेरे साथ रहमत करेगा, उसको गुमान अच्छा हो. जिसकी जिंदगी बहुत खराब गुजरी हो और अल्लाह के अहकामात हो उसके परे हट के गुजरी हो तो उसको कैसे ये गुमान होगा. ठीक है, अल्लाह गफूर रहीम है, लेकिन बहरहाल ईमान वाले को तो पता होगा कि मैंने तौबा की है या नहीं की है. तो ऐसी हालत में मौत आए, अल्लाह पाक हम सबको ऐसी हालत में मौत दे कि हम मौत के वक्त हमें गुमान अच्छा हो कि हाँ ठीक है मौत आ रही है लेकिन अल्लाह मेरे साथ अच्छा सलूक करेगा. ऐसी हालत में मौत आनी चाहिए. तो उसके लिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीकों पर ज़िंदगी गुजारेंगे, फिर मौत यकीनन ऐसी हालत आएगी कि मौत आएगी तो इंसान को आप देख लें, बहुत से लोग खुश होते हैं कि मौत के करीब होते हैं कि मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ. और हमारे माशरे में ऐसे भी है कि जो लोग बुजुर्ग फौत हो जाते हैं उनकी खुशी मनाते हैं, उर्स मनाते हैं. उर्स का मतलब है शादी, खुशी. तो अल्लाह से मिलना मोमन का बड़ी खुशी की बात होती है. तो हर एक को ये गुमान हो कि इंशाअल्लाह ताला अल्लाह मेरे साथ अच्छा सलूक करेंगे. अल्लाह पाक हमें समझ अमल की तौफीक अता फरमाए. So we are going to discuss some more abnormalities. We had talked about the mean cardiac axis, which is at 59 degree normally. And we saw hypertrophy of the left ventricle and hypertrophy of the left ventricle causing left axis deviation or right axis deviation. This is left axis deviation. Left axis deviation, that is when for example, when the left ventricle is hypertrophied, current will continue to flow in that direction for longer time. So axis will be in that direction. जिस साइड पे ज्यादा देर polarized state रहेगी, when muscle is hypertrophied, that will remain polarized for longer time as compared to the normal side. So this is the left axis deviation and that is right axis deviation, and we calculate this from the lead 1 and lead 3. We plot this we have seen this, and same we are going to apply here. Some more axis deviation we are going to see. Left bundle branch block. If there is some blockage in the flow of current in the left branch of the bundle of his, left bundle branch block, LBB, that is known as left bundle branch block, LBB, 3 dafa B. So left ventricle depolarizes late because there is blockage in the left side of the transmission of impulse. Left bundle, something wrong with the left bundle branch, so, current is delayed. That means right side will depolarize earlier than the left. So when the right side has depolarized, left bundle branch block, left side is still being depolarized. It means this is positive. So current flows from negative, that is right side is completely polarized, but this is depolarized, and left side is still in the resting state or polarized state. So current will be flowing from right to left.
Right to left means axis will deviate to the left. So the left ventricular depolarization is delayed and left ventricular remains positive for longer time. That means current continue to flow toward the left side for longer time. So axis will deviate to this side पे current जा रही है, that is axis. So the right ventricular depolarizes far ahead of the left and left axis deviation. This will cause left axis deviation because the current is flowing from the right to the left for a longer time. So this axis will be deviated. Slow conduction also prolong the QRS complex. This is also additional. That is, not only the axis will deviate, but as the current in the left ventricle is depolarization process is slowed down, depolarization is recorded in the form of QRS complex. When it is slowed down, that means QRS complex will take more time. So that is, duration of the QRS complex will be prolonged. Now we will see that this will be, you see, duration of the QRS complex here. You can see there is QRS complex is more prolonged, ज़्यादा चौड़े हो गया, more time is consumed in QRS complex formation, so more time consumption here in the QRS complex. So we will plot these like this. We have plotted where we have calculated the positive and negative, and we have plotted component vector and lead 1. We will plot it on it is on the plus side, and lead 3 it is on the negative side. We will plot it on the negative side after calculation, that is how much is negative, how much is positive, and calculate karke we will plot it. Now we will draw the perpendicular. These are the two component vectors we have calculated from these two leads, and we will draw perpendicular from this component vector and this component vector, and these two perpendicular will meet here, and we will draw this axis of the cardiac axis. So cardiac axis will be in this direction. So this is minus 50 degrees. This is 0, this is 90, this should be 90 degrees, so this is minus 50 degrees. So minus 50. So this is left axis deviation. ये उसी तरह की है जिस तरह लेफ्ट वेंट्रिकुलर इज हाइपरट्रॉफिक. लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफिड होगी तो भी लेफ्ट एक्सिस डेविएशन है. क्यों? उसमें भी देर तक करंट विल बी फ्लोइंग एंड टुवर्ड द लेफ्ट साइड, और इसमें भी बिकॉज ऑफ द ब्लॉकेज इन द लेफ्ट साइड करंट विल बी फ्लोइंग फॉर लॉन्गर टाइम इन दिस डायरेक्शन. सो दिस इज द लेफ्ट एक्सिस डेविएशन. Right bundle branch are just opposite. That is, the right ventricle depolarization is delayed, and right ventricle remains positive for longer duration. Current flows towards the right side, so axis will deviate toward the right side. That is simple. Left ventricle depolarizes far ahead of the left, so current will be flowing from the this left, which is the depolarized state, to the polarized state, that is the positive side, to the right ventricle. So the right axis deviation. So it will be, current will be flowing from left to right. So axis will deviate from left to right toward the right axis deviation. Slow conduction also prolong the QRS complex. So the additional, that is when slow conduction on the right side, it will prolong the QRS complex duration. So that duration. So ये भी उसी तरह. So this is, we will plot. This is lead 1 को प्लॉट करेंगे, lead 3 को प्लॉट करेंगे. You see, both are positive now. Both are positive, but you see, this is, we plot इसको जब हम कैलकुलेट करें लीड 1 को, this माइनस जो नेगेटिव साइड है, इतना सा वेक्टर है, this is negative side, this is not positive, this is negative. So this is on the negative side, लीड 1 में नेगेटिव साइड पे QRS कॉम्प्लेक्स है. तो उसको जो हम कैलकुलेट करेंगे, पॉजिटिव वेव माइनस नेगेटिव वेव दोनों करके देखेंगे, दिस विल बी नेगेटिव डायरेक्शन. तो उस पे हम निशान लगाएंगे, दिस माइनस दिस करके जितना भी बनता है उतने खाने, उतने मिलीमीटर. एंड इसके भी दिस पॉजिटिव वेव, नेगेटिव वेव को सब्ट्रैक्ट करके उसको लीड 3 पे हम पॉजिटिव साइड पे, दिस इज पॉजिटिव वेव, पॉजिटिव साइड पे प्लॉट करेंगे. वी विल ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस, दीज आर द टू कंपोनेंट वेक्टर्स हमें मिल गए फ्रॉम हियर, एंड वी विल कैलकुलेट द दिस इज कंपोनेंट वेक्टर दिस. We will calculate it from here, that is the perpendicular is drawn and the perpendicular they meet here, and this is the cardiac axis. Cardiac axis will be in this direction. You can see 90 से अगर exactly नीचे आता ऐसे होता, this was 90, this is 105.
So 100. So this is the right axis deviation. This normal ECG तो ऐसे होना चाहिए. ये abnormal ECG है, that is normal ECG. पिछली डायग्राम में भी शायद नॉर्मल ईसीजी आखिर में आई थी. सो दिस इज नॉर्मल ईसीजी. नॉर्मल ईसीजी ऐसे होती है. ये कॉम्प्लेक्स, दिस इज नॉर्मल. सीधा नजर आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स इज अपोजिट. लीड वन में ऐसा होना चाहिए, इज अपोजिट. और ये बड़े कॉम्प्लेक्सेस भी हैं और ये ड्यूरेशन भी ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस. ये ड्यूरेशन 2 खाने आ रहे हैं, इसमें 3-4 खाने आ रहे हैं इन दी कॉम्प्लेक्स. तो ड्यूरेशन भी ज्यादा है. सो दिस इज So right hypertrophy of the right ventricle, and ये पहले भी हम देख चुके हैं, इसको जल्दी से गुजारे. ये भी is this hypertrophy of right ventricle, this will cause right axis deviation. जिस टाइप पे hypertrophy of the right ventricle होता किस में. अच्छा चले, ये स्लाइड इसलिए कि right ventricular hypertrophy होती किन किन कंडीशन में hypertrophy हो सकती है, वरना ये स्लाइड तो हम पिछले लेक्चर में देख. right ventricular hypertrophy, right axis deviation. left ventricular hypertrophy, left axis deviation. left bundle branch block, left axis deviation. और right bundle branch block, right axis deviation. So hypertrophy of the right ventricle कब हो सकती है? Rheumatic pulmonary stenosis. right ventricle की बात कर रहे हैं. right ventricle कब होगा? When right ventricle has to exert more, it has to force more. उसने ज्यादा जोर लगाना पड़े, किसी मसल को भी ज्यादा जोर लगाने पड़े, that becomes hypertrophy. वजन उठाने लगो ना, एक्सरसाइज करने लगो, ज्यादा जोर लगाओगे मसल विल hypertrophy. हार्ट पे भी अगर लोड पड़ेगा तो that muscle will hypertrophy. If pulmonary valve is stenosed due to any reason, one reason is rheumatic pulmonary stenosis. Rheumatic endocarditis may very common. It causes the stenosis of the pulmonary valve, जिस valve में भी involve हो. So stenosis of the pulmonary valve will cause the difficulty in pumping. हम pulmonary artery में पंप करना मुश्किल होगा, तो left ventricle will exert more, it will be hypertrophy. So left ventricular hypertrophy will occur. So right ventricular hypertrophy will occur. So right axis deviation will occur in this. Congenital pulmonary stenosis, ये भी stenosis है. पल्मोनरी वेल्व तंग होगा तो राइट वेंट्रिकल कंजेनिटल है या एक्वायर्ड है, किसी डिजीज से हुआ है या जेनेटिक है या कंजेनिटल है. पल्मोनरी हाइपरटेंशन, हाँ एक और कंडीशन आप पढ़ेंगे डिटेल में. पल्मोनरी हाइपरटेंशन में देयर इज प्रेशर ऑन दी पल्मोनरी साइड आर हायर. तो इसका मतलब है कि राइट वेंट्रिकल हैज टू पंप इन द हायर प्रेशर साइड. नॉर्मली पल्मोनरी प्रेशर्स आर मच लोअर देन द सिस्टेमिक प्रेशर. तो पल्मोनरी प्रेशर अगर किसी वजह से ज्यादा हो, जिसको हम पल्मोनरी हाइपरटेंशन कहते हैं, दैट मींस राइट वेंट्रिकल हैज टू एक्सर्ट मोर. उसमें भी उसको ज्यादा जोर लगाना पड़ेगा टू पुश अगेंस्ट द हायर प्रेशर. लेफ्ट वेंट्रिकल इसलिए ज्यादा मसल भारी होता है, मोटा होता है कि नॉर्मली देयर इज हाई प्रेशर साइड ऑन द सिस्टेमिक. उसको तो हाई प्रेशर पे पंप करना है, तो वो अल्लाह ने बनाया ही मोटा है. राइट वेंट्रिकल पतला बनाया बिकॉज लो प्रेशर साइड है. बट इफ द प्रेशर इंक्रीजेज ऑन द पल्मोनरी साइड एज वेल, द वेंट्रिकुलर राइट वेंट्रिकल विल आल्सो हाइपरट्रॉफी टू पुश द ब्लड अगेंस्ट दिस higher pressure side. So pulmonary hypertension is another cause of hypertrophy of the right ventricle, and it will cause the right axis deviation. राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी ये देख चुके हैं हम, जल्दी से गुजार रहे. राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में ऐसे होगा, दिस इज अपोजिट एंड दिस इज अपोजिट. इसको जब हम प्लॉट करेंगे, दिस इज दी, इसको जब नेगेटिव साइड पे हम इसके लीड वन में नेगेटिव साइड पे हम प्लॉट करेंगे, इसमें पॉजिटिव साइड, ये तो पॉजिटिव साइड है, इसको प्लॉट करेंगे, एक्सिस परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, दे विल, तो ये इसका एक्सिस डेविएट्स टू दिस साइड. लेफ्ट वेंट्रिकल ये भी पहले, अब इसका काजेज ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी उसी तरह जिस तरह राइट वेंट्रिकुलर. एआर्टिक स्टेनोसिस, पल्मोनरी स्टेनोसिस से राइट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी करता है, तो एआर्टिक स्टेनोसिस से लेफ्ट वेंट्रिकल, इसमें एआर्टा में पुश करना है इसको. एआर्टिक स्टेनोसिस काजेज और हाइपरटेंसिव हाइपरट्रॉफी. पल्मोनरी हाइपरटेंशन काजेज द स्टेनोसिस ऑफ द पल्मोनरी वेल्व, हाइपरट्रॉफी ऑफ द राइट वेंट्रिकल. और ये हाइपरटेंशन, सिस्टेमिक हाइपरटेंशन जिसको ब्लड प्रेशर कहते हैं, उसमें हार्ट हैज टू एक्सर्ट मोर, लेफ्ट वेंट्रिकल हैज टू एक्सर्ट मोर टू पुश द ब्लड अगेंस्ट दिस वेरी हाई प्रेशर साइड. तो दैट बिकम्स हाइपरट्रॉफी. So hypertrophy of the left ventricle is hypertrophy of liver. More time is required for depolarization. ये हम पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन करके आ गए हैं. It remain positive for longer duration and axis shift to this hypertrophic side.
लेफ्ट साइड है। तो दी हाई वोल्टेज बिकॉज ऑफ द हाइपरट्रॉफी, हाइपरट्रॉफी होगी तो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की वोल्टेज भी ज्यादा होगी, मसल ज्यादा है, बड़ा मास है मसल का, तो वोल्टेज जनरेटेड विल बी मोर। सो दी राइट वेंट्रिकल कंप्लीटली डिपोलराइजेज बिफोर द हाइपरट्रॉफी डॉट, ये पहले भी कर चुके। बंडल ब्रांच ब्लॉक हो लेफ्ट या हाइपरट्रॉफी लेफ्ट वेंट्रिकल हो, बात यही होती है, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल डिपोलराइजेज अहेड ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड द स्ट्रॉन्ग वेक्टर फ्रॉम द राइट टू hypertrophied side will occur, left side will occur, तो left axis deviation will occur, this is left axis deviation, ये उल्टा हो गया। राइट एक्सिस डेविएशन में ये नीचे आ जाते हैं, लेफ्ट एक्सिस डेविएशन में लिम्ब 3 में आता है। उसको जब हम प्लॉट करेंगे तो लीड 1 में तो पॉजिटिव साइड भी है, पॉजिटिव साइड पे हम ड्रा करेंगे, और लीड 3 में नेगेटिव साइड पे, इसको नेगेटिव साइड पे हम ड्रा करेंगे कैलकुलेट करने के बाद, और उसके परपेंडिकुलर ड्रा करके ये वेक्टर हम मालूम करेंगे। दिस इज द डेविएटेड एक्सिस हैज डेविएटेड टू लेफ्ट साइड, दिस इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। तो these are the some more axis deviation, बंडल ब्रांच ब्लॉक और उसके काजेज हमने थोड़े से बात कर लिए। नेक्स्ट टाइम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक वी आर गोइंग टू स्टार्ट, दैट इज द कार्डियक एरिथमियास, रिदम, नॉर्मल मैकेनिज्म, नॉर्मल तो क्या है, एवरीथिंग इज रिपीटेड रिदमिकली, रेगुलर इंटर, इफ समथिंग रॉन्ग विद रिदम में बी लॉस्ट, तो उस रिदम को हम कहते हैं एरिथमिया। नेक्स्ट हम उसको डिस्कस करेंगे, एरिथमिया। होप यू आर फॉलोइंग मी। इफ यू हैव गॉट सम क्वेरी, some questions, you can ask me in the comment section, and please do share this video to rest of the students or most of the medical community, आप उसको share करें so that this may become a sadqa jariya for me, और आप share करेंगे and your contribution is also there and it will be sadqa jariya for you. Thank you very much. Hope to see you next video.